All right, what's up, everyone? Welcome to the new edition of Penta Podcast. I'm Shade Slayer, and I'm joined by the one and only, one of the superstars of Indian esports, Ocean Sharma. Ocean, what's up, man? How are you? Thank you very much for the introduction. And so far it's been a journey. So far it's been good. Looking forward to the things coming up in the future as well. So yeah, excited to be here in the present. Yeah, man, thank you so much for joining us today. A lot of fun things to talk about. You've had quite the illustrious journey so far. I think a lot of people who are watching this probably know you for your esports casting prowess, but I think that now has become one part of the million things that you've been doing. So let's start going all the way back to your theatre days. I just learned recently that you've done a lot of theatre work in your early days for about 8 years or so. How did that happen, and how has that journey kind of helped you in your esports career so far? So my theatre journey actually starts from even before I actually joined theatre and all. It actually was like my mom was the reason that I actually became a theatre artist as per se. The thing is, my mom wanted me to be in different competitions and all. Like, she herself was a professor at that time, right. So she knew that like एक बच्चा अगर he's starting like that, तो जितनी भी चीजों के अंदर he can just put himself, it helps him in co-curricular activities, etc. So I was right when I was like in second, third standards, I was in debates, declamations, extempore competitions, this and that. And when I was like around in 11th class or something, so I decided to go for like theatres and all. So I took theatre for like 8 years, school and college all together. And alongside that, it was science Olympiads, maths Olympiads. So I was like 5 times science Olympiad gold medalist, 2 times maths Olympiad gold medalist, 1 time ISTSC scholar, 1 time NTSC scholar, and alongside that, theatre artist. So it just started through that. And theatre was one of the main reasons of me joining theatre. Was now that I am a caster commentator, bachpan mein I used to stammer while talking. Right. So theatre has like voice modulation, speech therapies that actually help you when you're just stammering, and when you cannot get the words out. You have it in here, but it just cannot get out here. So that thing was like, theatre was a big help for me. Yeah. I think I can relate to some of those aspects, because I did dabble in a little bit of theatre myself, but most of it has been me as a Greek god in one of the instances. So I was painted in silver and I was just standing on top of a pedestal like that, holding like a bunch of grapes. So, it involved less amount of acting, but I completely agree in the fact that, there are a certain amount of skill sets that you need when you go in front of the camera and you have to be the voice. You have to be presentable. So, absolutely. And a lot of people go through eventually media training and, voice modulation training and all of that, accent training. But I think at least back in the day, it was a lot less frequent that someone goes through all of that, but you still need to overcome certain individual challenges that you have. Like I had a stage fear, right? What do you call? So it was very hard to go out and speak to like a bunch of people. And this we are talking like back in the school days when it was 100, 200 people in the school. Now it is millions of people watching online. Exactly. That fear is completely different, right? Whether you're in front in the studio, you already know there are millions of people watching. And then there are these stage events where there are thousands in the arena and millions watching behind. And to be that voice, it does require some bit of work in the past. And I'm glad that, that part of your journey enabled you to kind of take that to the next level and start your journey towards a shoutcasting career. So absolutely wonderful, man. Next, let us talk about your time at ISRO. I don't think anybody watching this is probably going to know this, but you worked in ISRO as an assistant scientist. Yeah, it was like once I was done with my bachelor, so I'm a mechanical engineer, and till this date as well, I have a mini library at my place. I still like to read. I still like to read about science and space sciences and this and that, right?
So like जब 11th हुआ तब से I was like, उससे पहले I was giving science Olympiads, maths Olympiads. In 11th class, I was awarded by Mr. Steve Jobs in United States. That was 2010. And once that happened, right? Once that thing happened, that actually pushed me much more to go for the goal of like space sciences and space studies and all those things. And once that happened, I gave exams of NDA, जितने भी आर्मी के एग्जाम्स हो सकते थे, कॉलेज के बाद CDS वगैरह भी सब चीजें दिया, and उसके साथ साथ ISRO का भी एग्जाम दिया, ISRO, DRDO, BARC इन सबके एग्जाम्स एंड ऑल दिए. So DRDO I went till what do you call it, conferencing round and the interview rounds, and ISRO was obviously one of the things that I wanted to be a part of. So it was statistical data analyst as a researcher. That was one thing that was going on. Alongside that, the most important part was कि I wanted to pursue masters as well. So एक practical knowledge है जो वो मिल जाती है proper overall, and that thing definitely helps. But the only thing that stopped me from pursuing it more was the time of COVID that actually happened. Had that not been there, I think the journey would have been like completely different. I would have pursued कि you know ISRO के लिए और ज़्यादा चीजें करनी है, masters का preparation करना है, because practical knowledge है तो GATE का exam तो it helps there as well. So it would have been a different journey, but all in all, I loved that time. So yeah. Amazing, man. I think whenever I have people come to me and say, hey, I want to become a shoutcaster, and they want to just basically put all their eggs in one basket, right? And I always tell them, hey, don't do that. Always have a backup option with you, and continue pursuing casting to a point where you can now take the dive and you have something to fall back on. But आप तो almost 10 अलग verticals ready रखे हो in case it didn't eventually work out, but that is amazing, man. And I must say that usually you would associate it all being interconnected in some way or the other, but you've had completely vast journeys there. So superb, I'd say the perfect foundation for eventually going ahead and making that dive into shoutcasting. So let's jump straight into that. How did you eventually end up coming into casting, and तब से आपका journey कैसा रहा? So this too again just started because of COVID times that happened, right? COVID से just पहले I was like juggling around कि job करूँ या फिर ये चीज़ करूँ, because दोनों चीज़ें आती रहती थी. So the thing is PUBG Mobile था उस समय, बहुत proper एक तरीके से चल रहा था. And okay, I'll tell this right now. हाइड्रा की स्क्वाड थी उस टाइम की. मैं लोगों को बता देना, बट अब चलो काफी पहले का टाइम है. हाइड्रा की स्क्वाड थी उस टाइम की, उनके कस्टम रूम में मैं खेला था. जब डायनेमो कस्टम रूम्स बनाता था, सो लाइव स्ट्रीम पे, सो उनके कस्टम रूम में मैं खेला था, एंड आई डिड 1v4 इन देयर कस्टम रूम. और मुझे उस टाइम पता भी नहीं था कि अच्छा ये ऐसे होगा वैसे होगा. मेरा एक दोस्त था, उसने साथ के साथ कि ये है, और उसके कॉन्टैक्ट से इधर की साइड. सो ही वाज लाइक कि भाई तू अच्छा खेला, स्ट्रीम पे देखा था, तो एक काम कर, इन लोगों के साथ लॉबी के अंदर ऐड करता हूँ. सो जब लॉबी के अंदर ऐड हुआ, ऐसी हल्की फुल्की बातचीत हुई, देन दे सेड वन थिंग व्हिच आई बिलीव एवरी सिंगल PUBG Mobile, BGMI, Valorant player as well know, कि हमारा ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर अगर खेलने के लिए लोग चाहिए होते हैं तो हम व्हाट्सएप ग्रुप से बुला लेते होते हैं. वो चीज होती थी. सो मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हुआ. फिर एक टाइम आया, उसके बाद आई टुक डाउन मॉर्टल इन अ नॉर्मल क्लासिक मैच एज वेल. वो सब चीज़ था, वो तो मेरे चैनल पे भी मैंने डाला हुआ था कि रिकॉर्ड कर रहा था, पता चला कि वहाँ पर सोल मॉर्टल करके लिखा हुआ था ये सब. सो उसकी वीडियो मैंने पोस्ट करी, ये सब वो सब. बट उसके पहले मैं स्क्रीनशॉट्स लेता था कि अगर कोई बड़ा प्लेयर आया, कि जैसे एक बार क्रॉन्टन आया था मेरे, उसके अंदर उसका क्रेट पड़ा था, स्क्रीनशॉट लिया, उस ग्रुप में भेजा, तो लोग बोलते थे कि ये स्क्रीनशॉट तो ये दिखाता है कि शायद किसी और ने मारो, या फिर ये वही क्रॉन्टन है, हमें क्या पता, या फिर ये वही प्लेयर है, हमें क्या पता कि तूने खत्म नहीं किया है. तो लोगों ने बोला कि रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर, रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पे पोस्ट करना स्टार्ट कर, ज्यादा बढ़िया रहेगा. बट देन आई थॉट कि अगर मैं गेम प्ले डाल रहा हूँ, मेरे जैसे 1000 लोग हैं जो कि गेम प्लेस डाल रहे हैं, मेरा गेम प्ले ऐसा क्या आउटस्टैंडिंग करेगा जो कि मैं दिख सकूँ. दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि अगर मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट है, फिजिक्स में इंटरेस्ट है, तो मैं गेम फिजिक्स समझता हूँ और चैनल पे गेम फिजिक्स पढ़ाना शुरू करता हूँ. सो दैट्स वेयर आई स्टार्टेड टीचिंग पीपल की जायरोस्कोप क्या होता है, रोल पिच यॉ कैसे काम करते हैं, एडीएस क्या होता है, एम असिस्ट कैसे काम करता है. And that thing just boomed because people did not know about it. People wanted to learn more about it. और जब वो चीज़ हुई तो मुझे then at that time Tencent, the then distributor of PUBG Mobile, उनका मुझे मेल आया एक. उस मेल के अंदर लिखा हुआ था कि we saw your potential, we would love you to be a part of the analytical desk of upcoming tournaments and all. We'll try you once. अगर सही चलता है ठीक है, अगर नहीं चलता तो कोई दिक्कत नहीं, but we'll see कि how well you can explain in front of a camera, in front of the crowd, in front of the people. So वहाँ पर मुझे PMIT का ब्रेक मिला. पहले तो मैं
छोड़ दिया था उसको. मेरे को लगा कि स्पैम मेल्स होंगे, ऐसे होगा, वो सब होगा, बट उसके नीचे एक इंडियन फोन नंबर दे रखा था. तो what I did is I took my dad's phone. मैंने कहा कि इनका डेटा अगर जाएगा तो क्या ही दिक्कत है. my dad's phone, उस पे मैंने कॉल किया, पूछा, तो तब पता चला कि एक्चुअली लेजिट है ये. और फिर वहाँ से the journey actually started, and since that time I think I've done more than 15,000 matches. And it's not just, I started with PUBG Mobile, right. But it's not just PUBG Mobile or BGMI that I did. I've done Clash Royale, I've done Clash of Clans, I've done FIFA, I've done Tekken, Street Fighter, Valorant, Counter Strike. So किया जरूर है ये सब चीजें, but at the end बात हुई है कि जिस गेम ने स्टार्ट करवाया उस गेम का एक अलग वो रह जाता है, because उन्होंने स्काउट किया ओवरऑल इन सब चीजों को. So yeah, it's been quite a journey. Valorant, I had the privilege of watching you in person in Bangalore when you did it. It is absolutely amazing, and it kind of I've done Valorant events for free, by the way. I know because I just love casting, so I was like, मेरे को बस डाल दो, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं. I think that shows the kind of passion you have. Unfortunately, I think over time, even some of the conversations I've had in DMs with people who wanted to become shoutcasters, that conversation within a few messages would be, कितना कमा सकता हूँ, right? I firmly believe, regardless of what profession you go into, success is something you need to chase. And money is just a byproduct of the success that will find you eventually. But I think the problem is, yes, we will get to the problems that casters are facing very soon. But I think at least initially, as an individual looks to grow, I think it's very important that they ensure that they are seen everywhere, that they continue to improve on their skills. Whether it is on live broadcast, whether it is off broadcast, there is a lot of homework that goes in, right? And of course, today it is, you have a lot of casters who are game specific. I think back in the day, like you said, even if we dial it back about 6 years or maybe even earlier, I started at least in 2015. I think back in the day, the problem was the games were not that big. Exactly. Firstly, because it was predominantly PC and it was a smaller community. Exactly. And you wouldn't be able to survive at all doing 1 or 2 titles. It was a question of doing 6 or 7, like you mentioned, right? And that was a time when everyone knew everyone inside the community, and cafes में खेलना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती थी उस समय लोगों के लिए. वहाँ से अब national TVs पर जाकर के भी खेलना, it just has been a journey for players as well, for productions as well. So I mean, it started from such small beginnings, right? For a lot of people, which of course people today, when they think about esports, I think BGIS, BMPS, on LAN, thousands of fans. That's not how it started. It started predominantly in cafes, in small rooms, where you have the players playing and you have 10 people standing behind him, watching intently, seeing how the magic happens, right? And it's kind of blown up, and we're very happy that it has. It's gone from what initially started off as a I'd say a hardcore passion. Today, luckily, we get to kind of make that our careers, so to speak. So that's an amazing journey, Ocean. Into casting, you've seen a lot of success. Like you mentioned, though you've done so many games, you're predominantly known by everybody, I'm guessing, for your success in BGMI. Let's talk a little bit about how BGMI has kind of developed, right, over the years. I think, like you said, just before COVID was when we saw that jump, that kind of start, that peak kind of happen, and COVID kind of accelerated that to an extent, with a lot of people having a lot of time to kind of play and enjoy, right? I think there was a simple funda back in the day, like, tournament karna hai to Saturday, Sunday karna hai, warna koi nahi dekhega. Exactly. But that kind of changed, where, a Sunday evening and a Monday morning was exactly the same. Exactly. They have the time with them, they want to consume content. So eventually esports did come to the forefront, continue to grow. Unfortunately, we did see a ban happen in between.
campaign, actually 2 for that matter. And so, for our purpose of the discussion, we're going to go PUBG Mobile, BGMI 1, BGMI 2. Yeah. Right? BGMI 1 saw the launch party, huge, the biggest numbers we've seen so far. 535K. Yeah. It was CCV, absolutely unheard of. And that continued to grow. And today, in BGMI and the success it's feeling, how has that journey been from your lens, Ocean? So, talking about PUBG Mobile, right? That was the peak time for one main reason. PMWL. Yes. OR was #2. It was just one side, I know, like East and West regions say. Right. But still coming down #2 actually was something जिसको लोग एक वो उम्मीद की किरण से देखते थे कि अगर हम एक रीजन में #2 आ रहे हैं तो अगर और एक टीम ऐसा कर पा रही है तो अगर हमारी बाकी टीम्स भी कहीं ना कहीं एक कंपटीशन के अंदर आती हैं ग्लोबली, then I believe we can be like at least they wanted कि भाई 3 टीम्स तो टॉप 5 में हम देख सकते हैं, जीते ना जीते इज अ क्वेश्चन बाद में, बट 3 टीम्स देख सकते हैं. ऑल द प्लेयर्स वर वेरी कट्टर प्लेयर्स इन दैट सेंस कि भाई खेलना है, ग्राइंड करना है, ये करना है. दैट वाज अ टाइम व्हेन वी वर प्लेइंग विद द लाइक्स ऑफ टीम्स ऑफ BTR, वी वर प्लेइंग विद द लाइक्स ऑफ EVOS and all those teams as well. We were playing with them in the same team, indoor lobbies, this and that, right? But I still remember 2nd September, 3rd September, me, Mavi, Gil from OR, we had a shoot of between the battlegrounds. It was something that used to happen internationally, and they were making 5 team series, top 5 teams of PMWL of that time, and in that OR was one of the teams. Obviously. So it was supposed to be between the battlegrounds, like proper shoot that happened. The shoot, the location where shoot was happening, there was no internet. Second को हुआ shoot, ठीक है. Third को हुआ shoot, जैसे ही shoot खत्म हुआ, as soon as we just get out of the shoot, it's just spamming. I can see already like एक chill zone करके ग्रुप है हम लोगों का, उसके अंदर it's like 10,000 मैसेजेस स्पैम हो रखे हैं कि भाई गेम गई. We were like thinking कि भाई शायद लोग खुद से अनइंस्टॉल कर रहे हैं, ये लिख रहे हैं गेम गई, ये है क्या, व्हाट इज गेम चले गई, गेम पे बैन हो गया, किसी की आईडी बैन हो गई, बिकॉज दैट इज व्हाट यूज्ड टू हैपन, जैसे कि गेम बैन हो गई, ये बैन हो गया, वो बैन हो गया. बट देन इट्स लाइक कि MEIATY ने 119 ऐप्स के ऊपर बैन लगा दिया. वन ऑफ देम इज दिस, एंड दैट वाज अ थिंग. एंड वो जो पीक था, वो पीक एकदम वहीं पर जाकर के इट वाज अ क्रैश, अ प्रॉपर क्रैश दैट हैपेंड. बट देन फर्स्ट PUBG मोबाइल एंड फर्स्ट BGMI के बीच में जो डिफरेंस था वो ये था कि द हाइप वाज स्टिल देयर, बिकॉज कोविड टाइम खत्म प्रॉपरली नहीं हुआ था. पीपल वर स्टिल वांटिंग टू प्ले समथिंग. दे कुड नॉट अडैप्ट टू कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल बिकॉज एक्टिविजन वाज नॉट डूइंग मच इन इंडिया फॉर दैट मैटर. अभी वॉरजोन आएगा, वॉरजोन मोबाइल, लेट्स होप कि एक्टिविजन डज समथिंग in the Indian market because that is needed, right? और कोई गेम थी नहीं. उसके बाद फौजी आई थी 15 मिनट. फ्री फायर तो खेलने नहीं थे किसी को. फ्री फायर तो वापस आ ही रहा है बट सीरियस. एंड फौजी थी. फौजी इज लाइक 15 पहले हाइप बनी थी बट 15 मिनट्स में द गेम वाज डन. सो इट वाज नथिंग लाइक दैट कि क्या है क्या नहीं, एक्सेट्रा. सो ऑल दीज वर द रीजन कि लोग तब भी एंटिसिपेट कर रहे थे कि वो स्क्वाड मिलेगी पुरानी. एंड देन लोगों ने पैसा भी लगा रखा था उस गेम में, स्किन्स खरीदी हैं, रॉयल पासेस हैं, वो सब चीजें हैं, डेटा उनका वो डेटा बचा रहेगा नहीं बचा रहेगा. अब बच्चों के लिए तो वही बात हो जाती है, बच्चों ने पैसा लगाया है, अगर किसी ने बचा के कुछ लगाया, ये सब वो सब. सो इसलिए वो फर्स्ट टाइम था जरूर. जब सेकंड टाइम बैन हुआ तो ऑडियंस के माइंड में एक चीज थी, दो तीन तरीकों से थी एक चीज. ये तो हमने पहले भी झेला है, अगर इस बार भी हुआ कोई खराब चीज नहीं है, मतलब खोने का दुख नहीं है. बट दे हैड अ होप कि पहले भी वापस आया है, इस बार भी वापस आ जाएगा. सो इसलिए इतना कुछ था नहीं. दैट्स व्हाई द फर्स्ट लॉन्च पार्टी वाज एक्सट्रीमली बिग. इट हैड द हाईएस्ट नंबर्स that there could have been. The second time जब गेम वापस आया and all, yes people were happy, people wanted to play and all. But एक और बात आती है, वो जो कोर ऑडियंस थी ना, जो उस समय PUBG मोबाइल की थी 2020 वाली, उनको 2023 में अगर आप देखो तो कोई अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था उसके सिर पे जॉब की प्रेशर आ चुका है. सो दे इवॉल्व्ड. Yes, there are people who are still playing right now, but the evolution did happen. और उस evolution के कारण वो थोड़ा सा क्रेज कम हुआ. बट अगर आज भी टूर्नामेंट देखना हो, आज भी अगर किसी को जॉनथन जानना है, किसी को स्काउट जानना है, they know these players. मिलने का मौका मिला, they would want to meet them, those people. But एक चीज है, toxicity कम हो गई hopefully. So one thing I'd like to get your thoughts on, Ocean, is जैसे आपने बोला, the first time when PUBG Mobile got banned, right? We were at the cusp of breaking something really big on the international scene, maybe even winning something big. And we saw like close to a 9-month downtime at that time. Do you think that
kind of affected the teams in a way where their momentum got slowed down, and has that played a factor why we've not won anything internationally so far? That for BGMI 1, yes. But also the fact that we lost the global matchmaking. Yeah. So हम लोग उनको सिर्फ खेलते हुए देख पा रहे हैं. Right. The actual competition comes when we and they play together in the same lobby for a longer period of time. Yes. That was the main reason that we were on par with the competition at that time, because कुछ भी होता था हम सबके, मेरे खुद के friend list के अंदर I had Laxi and Zaxi added from BTR. Right. So that was the thing, right? अगर वो लोग साथ में हैं, अगर आकर के खेल पा रहे हैं, कुछ क्लासिक्स खेल पा रहे हैं, तो हर किसी को पता रहता है कि competition क्या है. But now with the change that happened कि हाँ friends list तो गई, but we cannot add them as friends, we cannot play with them, nothing can happen. That was like the biggest downside from this game coming back, कि the competition that we wanted. Now we are that वो एक कुआं होता है. Yeah, exactly. वो एक कुआं होता है, हम उस कुएं में निकल नहीं पा रहे हैं. There's no outside hand that's coming to help us to just get out of it. Yes, India Korea did happen, but India Korea is just one tournament in those hundreds of tournaments that have happened after BGMI came back. Correct. So yeah. Yeah, I mean that frequency has gone down drastically, and I think, like you mentioned rightly, the exposure is something that is very key, that you need to have in a very regular basis and to be able to go up against the best. Yeah, and we are like 1 to 2 updates behind as well the global lobbies that there are, and it's a different game. That's a different game, right? उसका जिस तरीके का meta है, यहाँ का जो meta है, right now people are coming up with the 10-point system. Yeah. But 10-point system also requires the new zone system. Right. That's not here. Yeah, so we are lacking in some aspects. We are adopting some, but the adoption is not happening wholesome as needed. So I think even in PUBG long back, PC, I think the 10-point system was something that was very standard, right? With the fast-moving circles. So it'll be interesting to see how things play out in the coming time. Where do you see BGMI going in the year or so? In a year or so, 100%. I still remember थक का एक conversation that was cricket stadium के अंदर BGMI होगा, right? It's there, definitely. With Ahmedabad's BMPS, that was a massive success in the way it happened. Nothing like that. Esports has never seen anything like that. Oh yes. And now with the next LAN coming, I know where the next LAN is. I know the entire space that has been booked for the LAN. This is even bigger than what Ahmedabad gave us. This is the biggest thing in terms of esports that India has seen in 2024 so far. And now imagine if आने वाला, अगर पिछला BMPS ऐसा था, आने वाला BGIS ऐसा है, तो ईयर एंड में जो BMPS होगा वो कितना ज्यादा बड़ा हो सकता है. So the things are definitely, so for sponsors, for players, things are looking really good. But it's just the audience support जो शायद थोड़ा सा कम हुआ है. Yes, there is the core audience that is watching, but जो watchings पहले आती थी वो अभी उस level की नहीं दिख रही है. So that is something that needs to come back. So talking about watching, something that this is a conversation I've seen on Twitter as well among TOs, is the fact that with the amount of tournaments that have happened since BGMI 2 has happened, right? It has been I mean, it was there to an extent when BGMI first came out, but with BGMI 2 now, that trend has kind of continued, maybe even accelerated a little bit more, where players are constantly playing matches, scrims, matches, first party tournaments, third party tournaments, day in and day out. And I think, to be fair, they are athletes, no lesser than any of the other athletes. They are athletes, and burnout is eventually going to happen, not just for the player, but for the viewers as well. Do you think that has kind of been some of the reasons why we're seeing the numbers that we are? That is like one of the biggest reasons. That's what I was just, when you started this question, I knew that it's coming down to this one, because सुबह एक tournament हो रहा है, शाम को एक tournament हो रहा है, अगली सुबह एक tournament हो रहा है. Players की life क्या बन चुकी है? They are just getting up. They have 2-3 IDs for them. Just getting up, just उठे, आधी नींद में भी होंगे, they'll play. They'll have to play क्योंकि TO का पीछे से डंडा रखा है, obviously आगे से, और organization भी बोल रही है कि नहीं, खेलो, तुम्हें perform करना है, इसमें इतना prize pool है, इसमें इतना prize pool है, ये करना है, वो करना है. So the players who were players, they are now turning into some sort of robots who are just playing and playing and playing. Yes. I remember it was PUBG Mobile BGMI ka time when players revolted and said we need a Monday off. Yes. Nowadays players are still playing on a Monday. Why? Because ये tournament, वो tournament, ये आ रहा है, वो आ रहा है. But audience के लिए भी ना, suppose let's take an example of maybe
क्रिकेट, ऑल्दो इट्स अ फिजिकल स्पोर्ट एंड दिस इज मच मोर ऑफ अ मेंटल स्पोर्ट जो हम लोग खेल रहे होते हैं, इसमें उतना फिजिकलिटी नहीं होता है, बट स्टिल। बट अगर आप सोचो कि टीम इंडिया आज सुबह कुछ खेल रही है, सुबह एक T20 खेल रही है 3 घंटे का, शाम को उसी जगह पर फिर से एक और T20 खेल रही है, कल फिर से खेल रही है, आज नहीं होगा ऑडियंस, चलो आज भी देखने आ जाए, कल भी 1 साल बाद शायद ऑडियंस बोले कि नहीं यार ये तो खेले ही जा रहे हैं, तो हम आज वाला ना देख कर कल वाला देख लेंगे, अरे अगर इसमें हार रहे हैं तो उस वाले में जीत जाएंगे। सो वो जो क्रेज होता है, क्रेज चाहे बना रहे, बट ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस इस चीज से लो हो जाती है कि चलो इसमें नहीं जीते तो उस वाले में परफॉर्म कर देंगे। Which I mean, see, I completely get what you're saying. I think at the end of the day, अगर हर 2 महीने फुटबॉल वर्ल्ड कप होता तो हाइप नहीं होता, तो उस वर्ल्ड कप की अहमियत नहीं बचती। Absolutely, because you get to see 2 teams go up against each other, say once in a month or once in 2 months. There's going to be a lot of hype that players, the audiences will have to go and watch that, and for the players to compete as well for that matter. It's at a point where if things don't work out in the morning, you don't even have to wait as long as tomorrow to do something different because there's one right around the corner. And this is the reason that official is official. वो अपना एक टूर्नामेंट करवाएंगे, चाहे साल में एक करवाएं चाहे 2 करवाएं, बट ऑडियंस को पता है कि ऑफिशियल का वेटेज कितना बड़ा है, क्योंकि ऑफिशियल में हर कोई एकदम सीरियस तरीके से खेलेगा। अभी जितने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, सुबह आप अपनी कोर टीम के साथ खेल रहे हो, शाम को टीम के 2 प्लेयर्स बदल जा रहे हैं क्योंकि आप ट्राई आउट ले रहे हो, तो यानी शाम का टूर्नामेंट आप उस तरीके से नहीं खेल रहे हो। बट यही कोई और टीम यही चीज सुबह कर रही होगी, तो सुबह किसी के ट्राई आउट चल रहे, शाम को किसी के ट्राई आउट चल रहे, टूर्नामेंट तो ओवरऑल चल रहा है। सो दैट इज समथिंग जो गेम के उस एसेंस को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक बैकफुट पर लेकर के जा रहा है, जिसके कारण बहुत सारे प्लेयर्स सीरियसली भी नहीं खेलते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट्स, व्हिच डजंट मेक सेंस, बट ठीक है। I mean, it is what it is. So, hopefully, these are things. Of course, it's a learning process for the entire ecosystem, right? And it's learnings that all of us can take ahead. But they'll have to learn in 2024. Otherwise, यही चीज अभी भी चलती रही, 25 में भी चलती रही, 26 में भी चलती रही, तो गेम के लिए लोग यही बोलेंगे कि हाँ अच्छा YouTube खुला, अच्छा ये भी हो रहा है टूर्नामेंट, कोई बात नहीं, आधे घंटे बाद वो वाला अभी काम कर लेते हैं, वो देख लेंगे, वो होगा वो देख लेंगे, सेंस नहीं बनता। Yeah, absolutely, I completely agree, man. All right, let's talk about some of the teams. And where they stand today, right? We'll start with Godlike Esports. Absolute huge fan base, superstar players. Don't need to name them anymore. Everybody knows them. They expected there was a lot of expectation on their shoulders coming in with the roster, right? And they did deliver initially. They were doing really well. But it has not been the case for the last year or so, where yes, they have an awesome fan base, but the players have not really been able to convert their performances into results. Why do you think that is the case, and what changes do you see kind of changing that balance for Godlike Esports? I believe for Godlike, the things that there are coming up is उनको अभी मेरे अकॉर्डिंग काफी ज्यादा चीजों पर, बहुत सारे माइन्यूट डिटेल्स है जिन पर फोकस करना और जिन पर काम करना है, इसको ये उनकी मैनेजमेंट को करना पड़ेगा। प्लेयर्स नो डाउट अपनी चीजें करते हैं, अपनी मेहनत करते हैं, दे आर डूइंग ऑल दीस थिंग्स, बट मैनेजमेंट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि कहां कहां पर कमी है। अभी उनके पास फायर पावर है, बट वो फायर पावर कम्युनिकेशन में एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। BGMS चल रहा था स्टार स्पोर्ट्स का सीजन 2, जिसमें गॉडलाइक क्वालिफाई नहीं करी थी। जी का एक प्लेयर था, आई बिलीव वो स्लग और नूब, उन दोनों में से किसी एक ने 1v4 किया था बूट कैंप पर, सैनॉक का वो मैच था, आई स्टिल रिमेंबर। एज सून एज दैट हैपेंड, आई वेंट टू क्रॉन्टन, आई टोल्ड देम कि ये पूरी फाइट में साफ दिख रहा है कि तुम्हारा मिस कम्युनिकेशन कितने खराब तरीके से है, एंड दैट डिड हैपन एट दैट फाइट। क्रॉन्टन सेड, कमलजीत सेड, यस वो हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तक वो मिस कम्युनिकेशन जो है वो फैक्टर कहीं ना कहीं मुझे लगता है बना हुआ है, क्योंकि उनकी फाइट्स में इस तरीके से लगता है कि अगर कोई एक प्लेयर आगे जा रहा है तो एक प्लेयर थोड़ा पीछे रह जा रहा है, पूरी टीम एक तरीके से मूव नहीं कर पा रही है। I know Godlike fans might hate me for saying this, but this is the truth. अगर नहीं होता, अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, फ्रैगिंग पोटेंशियल है उनमें, बट कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं, अगर ये दोनों चीजें प्रॉपर होती तो अच्छा चल रहा होता। एंड दिस व्हाट वी कास्टर्स वांट। अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रूव अस रॉन्ग, विल बी मोर देन हैप्पी, राइट? अगर आप हमें प्रूव कर सकते हो गलत, विल बी मोर देन हैप्पी कि हाँ चलो हमें गलत प्रूव किया, उनका परफॉर्मेंस आया। इवेंचुअली हमें ये नहीं है कि हमें गलत प्रूव किया, हमें ये आएगा कि भाई उस टीम का परफॉर्मेंस आया। परफॉर्मेंस नीड्स टू कम, कि अगर एक IGL बोलता है कि रश करो, टीम जाने को तैयार है, टीम ये कर रही है कि नहीं मैं अभी हील करूं, ये क्या करूं, कैसे करूं, तो वो कम्युनिकेशन सबसे बड़ा फैक्टर है। दैट कम्युनिकेशन नीड्स टू बी ऑन पर। अगर वो नहीं हुआ तो फाइट जितनी मर्जी ले लें, आप 4 डायरेक्शंस में फाइट लेते रह जाओगे, बट कम्युनिकेट करोगे तो एक डायरेक्शन में अच्छी फाइट ले सकते। Yeah, it's a team game at the end of the day, and unless you have that kind of synergy at the
topmost level, Yeah. the individual skills can only take you so far in a team game. So, what do you think needs to change here? Is that a player change that needs to happen? Is it something they need to do in terms of their support staff, or is it a training regime that can probably change this around for Godlike? Training, yes. They need to focus more on like their own individual capacities and how एक पजल होती है, राइट? पजल के सारे पीसेस इंडिविजुअल होते हैं, बट पजल तब कंप्लीट होती है जब सारे के सारे पीसेस एक साथ एक जगह पर आकर के लग जाए. सो इट्स दैट्स द सेम थिंग फॉर गॉडलाइक. इट्स अ पजल जिसमें कभी आप अगर अपोलो को लेकर के आ रहे हैं, आदित्य आ रहा है, कैसे चेंज हो रहा है, कैसे नहीं, कौन सा प्लेयर कहाँ पर है, कहाँ नहीं, बट उस पजल का अगर सेंटर कॉर्नर जॉन था ना, तो उसके अराउंड कैसे वो पजल बनेगी और किस तरीके से वो पजल फिट होती है, सो दैट यू गेट दैट ब्यूटीफुल सीनरी आउट ऑफ द पजल. दैट इज व्हाट गॉडलाइक नीड्स टू अंडरस्टैंड. एंड इनफैक्ट मेरा बात कुछ दिनों पहले हो रहा था क्रॉन्टन से. ही सेड गॉडलाइक के जो प्लेयर्स हैं, दे वर्क गुड एज देमसेल्व्स, बट एक कोच की शायद उनको जरूरत ना हो इस समय. बट व्हाट आई फील इज कि अगर एक कोच होता है आपके पास, तो कोच का जो एक अपर एडवांटेज है वो है कि सारी स्ट्रैटेजीज और सारी चीजों को समझना, और आपके लिए भी कभी कभी काम आसान बना सकता है कोच. टू मे बी कोच एक ऐसी चीज देख सकता है शायद जो आप एज अ प्लेयर नहीं देख पा रहे. मैं नहीं बोल रहा कि प्लेयर्स कभी नहीं देखते हैं वगैरह, प्लेयर्स भी देखते हैं, बट कोच का एक जो अपर एडवांटेज आ सकता है, दैट इज समथिंग जो टीम को कहीं ना कहीं से कहीं और लेकर के जा सकता है, जो इस टीम को अभी भी जरूरत है बहुत ज्यादा. So, yeah, awesome, man. And hopefully they're able to turn this around and we get to see the Godlike of previous, where they're just dominating lobbies. The TSM entity Godlike is what people want to see, but hope that happens. Hope that happens very soon. So, moving ahead, what is today Team IQ Seoul. Seoul had an amazing roster, starts really well with them winning the official. But since then again, they went through a similar down phase, not as much as Godlike, but we did see those wins not really come for a long time, and eventually they went ahead and we have an all new roster now in place at Seoul. I think there is no questions that the management is super clear on the fact that they will take the harsh decisions, they will do what needs to be done to ensure that success continues. Exactly. What do you think, according to you, were the reasons why the previous roster kind of fell off, and where do you see this new roster kind of going in the coming years? So the best part about Team IQ Seoul, or team, not just team, S8UL itself is कि they are okay with taking harsh decisions if it is meant for their betterment. Right. वो कभी भी उन harsh decisions से पीछे नहीं हटते हैं. Right. So एक ऑडियंस को, एक फैन को ये समझना पड़ता है उस समय कि वो उन प्लेयर्स का फैन है जो खेल रहे हैं, या फिर वो सोल का फैन है जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो सपोर्ट कर रहा है. सो वहां पर ऑडियंस को, अभी जैसे जो पुरानी टीम सोल थी जो अब कार्निवल में जा चुकी है, ओमेगा, गॉब्लिन, हेक्टर, नियो, अक्षत, जब ये लोग हटे तो बहुत सारे, इनफैक्ट ट्विटर पे भी ये चलता था कि हम ओमेगा के फैन हैं, हेक्टर के फैन हैं, इन सब के फैन हैं, या फिर हम टीम सोल के फैन हैं, कहां पर रहेंगे. टीम सोल को इस समय उससे फर्क नहीं पड़ता. टीम सोल इज लाइक, अगर आप दिल से हमारा सपोर्ट करते हो तो आप उस टीम के साथ भी करोगे, आगे भी करोगे. दिस इज व्हाट टीम सोल नोज, एंड व्हाट दे एक्चुअली केयर अबाउट इज उनके खुद के रिजल्ट्स कैसे आएंगे. ऐसा भी नहीं कि इस टीम में कुछ खराब हुआ था कि इसलिए इस टीम को हटाया गया. दे वर लाइक इन टॉप 5 इन BMPS as well, which is a good decision, like which is really good. बट उस समय मैनेजमेंट को शायद ये लगा कि टॉप 5 इज नॉट व्हाट वी आर हियर फॉर. एब्सोल्युटली. ये बात थक की बहुत अच्छी है, ये बात गोल्डी की बहुत अच्छी है, ये बात मॉर्टल की बहुत अच्छी है, दैट दे नो कि भाई जब सही डिसीजन लेने का टाइम है, जब सही तरीके से सोचने का टाइम है, जिस सेकंड अपर मैनेजमेंट ने ये सोच लिया कि डिसीजन होगा, चाहे वो हार्श लगे, उस समय खराब लगे, वो डिसीजन लेंगे. उस समय शायद खराब लगे, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 10 दिन बाद, एक साल बाद ऑडियंस को पता चल जाए कि ये डिसीजन सही चीज के लिए लिया गया है. दैट वाज द मेन रीजन. जो पहले वाले BGMI के टाइम पे जब इन्होंने पहला BMPS जीता था, दैट वाज द मेन रीजन कि उस समय रेगल टॉस खेल रहा था, उससे पहले रेगल टॉस, वाइपर, मॉर्टल, ये लोग खेल रहे थे. दे रियलाइज कि भाई
डगमगा चुके हैं थोड़े से प्लेयर्स, तो चेंज करने की जरूरत है. नो डाउट मॉर्टल इज द बिगेस्ट इमोशन इन टर्म्स ऑफ PUBG मोबाइल वर्ल्ड. एब्सोल्युटली. एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट BGMI, आई एम टॉकिंग अबाउट PUBG मोबाइल वर्ल्ड ग्लोबली. आज भी अगर मॉर्टल किसी इंटरनेशनल जगह पर जा रहा है और लोग बोले कि भाई ये PUBG मोबाइल का मॉर्टल है, ऑडियंस बाहर भी आएगी उससे मिलने. लंदन में भी उसका एक बहुत बड़ा मीटअप हुआ था. सो दैट इज व्हाट शोकेसेस की मॉर्टल का इमोशन कितना बड़ा है. बट थग ने और उन सब लोगों ने मिलकर के डिसीजन लिया कि हमें एक नई टीम चाहिए, स्क्रैच से नई टीम चाहिए. दिस वाज द हार्शेस्ट डिसीजन दैट दे हैड टू टेक, बट दे डिड टेक एंड दैट हैपेंड. आई स्टिल रिमेंबर मेरा और थक का बात हुआ था जब BMPS का फाइनल डे था. तो उस समय इनके पास 84 प्लस पॉइंट्स की लीड थी उस BMPS में जो ये जीते थे. तो मैंने उस समय ऐसी थक को मैसेज किया, मैंने कहा ब्रो आज मॉर्टल को खिला दे एक गेम. उसने बोला टेंशन मत ले. लास्ट गेम मॉर्टल को खिलाया जब एक बहुत अच्छी खासी लीड थी. वो लास्ट गेम था, मॉर्टल के हाथ में DP थी, DP28 और उसके साथ साथ मॉर्टल का हैजर्ड सूट था. मॉर्टल ने DP से आखिरी बंदे को, सेकंड लास्ट बंदे को नॉक किया और ग्रेनेड से बंदे को सीधा खत्म किया. ओह यस, आई नो दिस. एंड वही चीज वो पुराना मॉर्टल दिखा, बस उतनी सी एक थोड़ी सी झलक में ऑडियंस के लिए वो इमोशन वापस आ गया. सो दैट जस्ट शोकेसेस कि दे नो व्हेन टू टेक द हार्श डिसीजन, दे नो व्हेन टू टेक द राइट डिसीजन. इट जस्ट पेज ऑफ. एंड दिस न्यू आइको सोल it's a winner team. It's the best part about this team is किसी से डरते नहीं है. And एक किसकी स्ट्रीम था, आई गेस ये सिड की स्ट्रीम में देख रहा था. सिड ने बोला कि इनको गेम खेलने के लिए हम कुछ ट्रेन नहीं करते, कुछ नहीं. अयोगी देखता है, मायावी देखता है, वो सब करते हैं. इनको हम बस थोड़ी सी PR ट्रेनिंग देंगे जिससे ये बाद में इंटरव्यूज और उस सब में और अच्छे हो सकें. हमारा भी वो काम है. बाकी इनको अयोगी पे छोड़ दिया है कि जैसे गेम खिलाना है जो करना करे. एंड अयोगी इज वन ऑफ द बेस्ट डैम एनालिस्ट दैट देयर इज इन इंडिया राइट नाउ. एंड ही नोज व्हाट नीड्स टू बी डन, कैसे करना है कैसे नहीं. वो इंडिया के इंटरनेशनल जोन्स ये सब वो सब चीजें पढ़ता है, सब चीजें जानता है. सो they just do all the work, they do all the hard work. और टीम आइको सोल का एक चीज बहुत अच्छा है जो दिखता है उनमें, सर झुकाओ काम करो, खत्म. Yeah, they're more of operating behind the shadows, right? They're very silent sort of a team as opposed to. और जिस दिन सेलिब्रेट करते हो उस दिन ऐसा सेलिब्रेट करो कि दुनिया देखे कि क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो. Absolutely. Awesome. Let's talk about a little bit about Gladiators, right? Gladiators, the roster came out big, and I think over time they've not fallen off per se, but they're ones who I think when BGMI 2 kind of came out and they immediately started winning everything, a lot of people expected them to whitewash most of the lands, which didn't really happen in reality. So talking about that team, right? मैंने कुछ दिनों पहले एक स्टोरी डाली थी एंड उस पर डेस्ट्रो का रिप्लाई आया था. मैंने ये बोला था कि ग्लैडिएटर्स गॉड्स बने और गॉड्स बन के लड़ना भूल गए. सो डेस्ट्रो और मेरी कभी भी किसी चीज को लेकर के कहा सुनी नहीं हो सकती है, बिकॉज मी एंड डेस्ट्रो, जो मेरा पहला टूर्नामेंट कास्टिंग का था उसमें डेस्ट्रो खेल रहा था. सो वी गो दैट वे बैक. बैटल अड्डा स्ट्रीमर्स बैटल करके था 17 अगस्त को बैटल अड्डा, वो पहला टूर्नामेंट था. सो वहां से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं. उसको डेस्ट्रो को मैंने यू मुंबा में देखा है, उसके बाद टीम एक्स पार्क में देखा है, ग्लोबल ई स्पोर्ट्स का डेस्ट्रो भी रहा. सो बहुत सारी टीम्स हुई डेस्ट्रो की और उसका एक अलग तरीके का जर्नी रहा. सो दैट पर्सन नोज व्हाट ही हैज गॉन थ्रू. उस समय उसके पास उतनी ऑडियंस नहीं थी, उतने लोग नहीं थे, उतने फैंस नहीं थे, बट स्टिल वो तब भी प्रूव कर रहा था, तब भी टॉप 5 फ्रैगर्स में रहता, तब भी हर चीज में रहता था. अब उसके पास लोग हैं क्योंकि वो बैक टू बैक टूर्नामेंट जीत रहा है. द मोस्ट फेमसली इनफेमस द स्टील ऑफ ओरंगुटान ऑफ BGMS, वो 1 पॉइंट विन, वो वहां से ज्यादा फेमस हुआ. बट उसके पहले की कहानी जो है उसकी, वो एक अलग ग्राइंड रही. एंड दिस टीम, ही इज नॉट लीविंग दिस टीम एट ऑल. ये टीम एक और टूर्नामेंट विनिंग पोटेंशियल रखती है, एक या उससे ज्यादा टूर्नामेंट्स का विनिंग पोटेंशियल रखती है. एंड दिस टीम कैन गिव वेरी गुड फाइट्स. बट दी ओनली थिंग इज, इनफैक्ट डेस्ट्रो को जो मैं स्ट्रीम कर रहा था और डेस्ट्रो स्ट्रीम पे आया था और उसने बताया भी कि जो चीज मैं बता रहा हूँ वो सही है. दी ओनली थिंग इज द टीम इज बिकमिंग अ बिट टू प्रेडिक्टेबल राइट नाउ. ऐसा होता है जब भी कोई टीम बढ़िया खेलती है ना, बाहर BTR खेलती थी तो हम लोग खुद BTR के गेम प्लेस देखते थे कि अच्छा ये क्या करते हैं, ये ऐसा करते हैं. नोवा खेलती थी, लोग नोवा के गेम प्लेस देखते थे. दिस इज द रीजन. जब आप एक बहुत हाई पर होते हो तो लोग आपको जानते हैं, नोटिस करते हैं, तो आप उनके लिए प्रेडिक्टेबल बनते हो क्योंकि बहुत सारी जनता आपको देखती है. सबसे बेसिक चीज है ग्लैडिएटर्स की, गॉड्स रेन की. मिलिट्री बेस उतरेंगे,
मिलिट्री बेस के उतर के लेफ्ट साइड वाला ब्रिज लेंगे और वहीं से दे नेवर रोटेट फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि नोवो रेपनोए पर एक टीम होती है, मेडल मोस्ट प्रोबेबली वहां पर जाती है, रेवेनेंट की जो टीम है वो मिल्टा के पास जाएगी, फार्म के पास एक टीम होगी, तो वो कभी भी नोवो रेपनोए वाले ब्रिज से नहीं जाएंगे, हमेशा दूसरी साइड वाले ब्रिज से जाएंगे, विच इज अगेन ऑलवेज 99.99% ऑफ द गेम्स में ये होगा। पहले 3 सर्कल कोई फाइट नहीं होगी, जोन के एज टू एज मूव करेंगे, चौथे सर्कल या 5वें सर्कल में उनकी पहली फाइट होगी, वो डिसाइड करेगा कितने प्लेयर्स उनके बच के आगे जाएंगे, अदरवाइज उनके सारे प्लेयर्स वहीं खत्म होंगे या फिर सारे प्लेयर्स बच के सीधा गेम जीतेंगे। चौथे 5वें सर्कल की एक फाइट है, उसके बाद सेंटर ऑफ द जोन है। ये उनका एक पूरा प्रिडिक्टेबल पैटर्न बना हुआ है, राइट, जो उस समय किसी ने नहीं देखा बीजीएमएस में, क्योंकि उस टाइम किसी को ये था भी नहीं कि भाई they were not on the radar, एग्जैक्टली। फिर अगेन बीजीआईएस में नहीं देखा, क्योंकि उस टाइम बीजीआईएस में अलग ही कॉन्वर्सेशन चल रही है, कौन सी टीम खेलेगी, कैसे खेल रहे हैं, कैसे नहीं। बट जब लोगों ने देखना शुरू किया तो इतना प्रिडिक्टेबल हुए लोग कि अगर कोई भी मिलिट्री बेस के आसपास वाले एरिया से या फिर मिडिल आइलैंड में मूव कर रहा है तो वो हमेशा अपना बैकलाइन देखेगा, एक टीम को पकड़ेगा, दैट इज गॉड्स रेन। सो यहीं पर उनका प्रिडिक्टेबिलिटी फैक्टर आया। बट आई नो डेस्ट्रो से मेरी बात हुई, उसने बोला कि ब्रो इट्स अ बैड फेज, शायद थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज में हम लोग चेंज करें। So looking forward to that. Likewise, man. And I think you pretty much nailed it in the fact that, this is, I think, a global trend where, when one team starts dominating, people want they're to in see the them. radar, their gameplay gets broken down as at the micro level, small little nuances are studied, and you have all the strategists out there at the highest level to kind of anti-strat that and figure out how you can break that play down. Exactly. And unless you have a lot such strategies in your back pocket where you can instantly adapt, it's going to be a slightly longer process for them to adapt and come back in. And we're also hoping, get to see Destro perform really well in BGIS that is coming very soon. So awesome, man. Let's now move on and talk a little bit about shoutcasting today in India. I think we did briefly talk about the fact that there are certain things that shoutcasters do face in the industry today. I think one such instance is something that we chatted earlier, is being a caster for a single game versus casting multiple titles. You've done multiple titles, I've done multiple titles in the past. How does a caster decide this? Is that like a single shot answer as to, hey, should he do single games or should he do multi games? If he's doing multi games, how does he branch into multiple games and which games to do? How does one arrive at that decision? Could you walk me through that process? So it all comes down to the caster themselves कि पहली चीज, अगर आपको caster बनना है और आपको किसी नई गेम में जाना है, ऐसा नहीं कि आप पहले दिन ही जाकर के कर जाओ, खेलो उस गेम को। Once you play the game, you learn the basics. Once you learn the basics, you learn the mediocre skills, then you learn the advanced skills and all. So वो सब चीजें बहुत ज्यादा फैक्टर में आती हैं। बहुत सारे लोग होंगे कि आज ये गेम कर रहे हैं, कल दूसरी गेम करें, बट अगर आपने सीखी नहीं है तो you'll be talking very generic in the newer game कि हाँ अच्छा है, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा कर, that is not the thing. फॉर एन ऑडियंस पर्सपेक्टिव एक कास्टर वो आदमी है जो ऑडियंस के मन में एंटिसिपेशन बिल्ड करता है। एंड ये चीज अभी मैंने रिसेंटली प्रो कबड्डी के टाइम पे स्टार स्पोर्ट्स में भी सीखी कि व्हाट यू शुड डू इन द एंटायर सिनेरियो, हाउ टू एक्चुअली डू द कास्टिंग, राइट। जो हो रहा है सामने वो तो एक ऑडियंस को दिख रहा है, एक इंसान को दिख रहा है कि प्लेयर ए अगर प्लेयर बी को टेक डाउन करता है वो ऑडियंस को दिख रहा है, लेकिन उसका आगे आने वाली चीजों पर क्या एंटिसिपेशन होगा कि अगर ये प्ले डाउन हुआ तो ये टीम 3 मैन बची है तो इनका खेलने का तरीका कैसे बदलेगा। That all matters. That is what storytelling is. Yes. Storytelling is not कि it's not screen reading. Exactly. Right? It's not screen. It's not the finished feed reading and all. It's not just that. It's about if player 1 takes on player 2 of a different team, how does that affect player 1's perspective and how does that affect player 2's perspective? आपको ऑडियंस को वो सुनाना है, देख वो पा रहे हैं, सुनाना डिफरेंट होता है। सो यही चीज है, जब आप गेम खेलोगे तो आप ये चीज समझोगे। सो कास्टर्स को सबसे पहली चुनौती, अगर आपको लगता है कि आपको गेम नया किसी गेम में घुसना है, पहले उसको सीखो, उसको खेलो। और खराब भी खेला तो भी एटलीस्ट बेसिक्स तो आपको समझ आ जाएंगे कि क्या है, कैसे नहीं, क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं। थोड़ा खुद से खेल के देख लो, फिर उसकी यूट्यूब वीडियोस पर जाओ कि अच्छा कोई और टूर्नामेंट में ऐसा हुआ था, अच्छा ये स्ट्रेटेजी होती है, ये तरीका होता है। वंस यू लर्न देन यू अडैप्ट। एंड अगर आपके पास एक ही गेम है सिर्फ और आपको लगता है कि आप दूसरी गेम में जाना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। ऑडियंस विल बी सपोर्टिव
एंड वन मोर फैक्टर इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, शायद आप दूसरी गेम ज्यादा अच्छे से कर पाए एज कम्पेयर टू, आजकल बहुत सारे लोगों को बीजीएमआई में घुसना है, बट जगह नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। अगर कास्टिंग में आपको लगता है, ट्राई टू गो फॉर वैलोरेंट, ट्राई टू गो फॉर मे बी CS2, लाइक देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, क्या पता आप उसके अंदर ज्यादा नाम कमा लो, बट इट्स द रोड नॉट टेकन एंड यू आर नॉट टेकिंग इट, सो यू जस्ट डोंट नो। Right. And I think, yes, like you mentioned, starting off casting BGMI, say in 2018, 2019 was a lot easier to break in than today, where you have a lot of casters already. I was having a chat with a good friend of mine, OG, who casts PC titles, and he does a lot, not just in India, but he also explores the EU market, the NA market, and it is for people who are not aware, it is jam-packed. There is competition, massive competition in the thousands at every level, whether it's at the amateur, the semi-pro, or the pro level. So it is very hard for someone to get in, and like you mentioned, it's very important that you understand the game. That at its core, I think, is supremely important. Especially with there being instances with the audiences as well sometimes, where casters become a little critical about certain things that happen. I think it requires one to have that kind of knowledge, which eventually turns into credentials, which then means that, hey, the audience takes you seriously. Sometimes, I've also seen situations where, the players getting offended in that certain happens. times. But if a caster has stats to back the things down, then I don't think so कि players का offend होना कुछ बनता है. Like whenever like I'm doing pro kabaddi and all, and जो भी चीजें मैं कर रहा होता हूँ, so वहाँ पर हमें हर दिन एक stat sheet मिलती है, जिसमें अच्छे player से लेकर के खराब player तक हर एक चीज लिखी होती है. ये player क्यों अच्छा है, ये player क्यों खराब है इस समय, इस सीजन में, ये पिछले सीजन के कंपैरिजन में इस सीजन कौन सा ऊपर गया, कौन सा नीचे गया. एंड वी आर सेट दिस थिंग, अगर कोई खराब खेला है, किसी का ये स्ट्रैटेजी खराब रहा है, तो उस प्ले को आप खराब बोल सकते हो, प्लेयर नहीं, प्ले को खराब बोल सकते हो, क्योंकि वो है, एंड उसमें कोई ऑफेंड होता भी नहीं है. सो दैट इज वन थिंग दैट here as well in esports people need to mature up, they need to understand this thing कि अगर कोई प्ले खराब हुआ है जिसके कारण टीम का पूरा एक सीजन तक खराब जा रहा है, then casters are allowed to say this कि खराब हुआ है तभी तो है, अदरवाइज कोई ऐसे क्यों बोले, कोई फर्स्ट पोजीशन पे बैठा है तो कोई क्यों बोलेगा कि और अच्छा हो सकता था, और क्या ही अच्छा हो सकेगा जब कोई फर्स्ट पर है. अगर आप बैक टू बैक सारे ही टूर्नामेंट जीत रहे हो, देन यू आर द बेस्ट टीम. बट अभी भी कोई बेस्ट टीम नहीं है, क्योंकि सारे टूर्नामेंट्स कोई भी नहीं जीत रहा है. सो यस, देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट फॉर एवरी टीम. जिन टीम्स को पता है वो कर रहे हैं काम, जिनको नहीं पता है तो दिक्कत उनके लिए हो रही है. या फॉर श्योर मैन. All right, let's talk about another thing that in shoutcasting, especially in India, something that I've seen happen, and of course, we did have a podcast back in November where I did discuss this with a few other shoutcasters as well. When it comes to being valued for the work that you do, so I think it goes without saying, because even in tournaments, I'd say one of the MVPs of the tournament is the broadcast, and it is like you rightly mentioned, it is the players and the casters that eventually drive that broadcast, right? And unfortunately it has come to a situation where you as a caster are told this is what you're worth, and this is how much you're going to make out of this. So it kind of becomes hard for casters to eventually do this for a living, and that is I'm talking at the time. And for someone to kind of have a foresight then of the kind of future that one can scale up to, kind of becomes hard. How do you think that's a realistic problem today, and how does one avoid it? Talking about casters, casting and all those things, right? बहुत सारे casters खुद को इसलिए भी अंडर वैल्यू करते हैं, उनको लगता है कि वो जहां पर पहुंचे हैं वो कुछ नहीं है. Because so every single का अगर मैं भी देखूं that where I am, मेरे माइंड में अभी भी वो एक छोटा सा बच्चा आएगा जो अभी भी मेहनत कर रहा है. So I feel कि like कहाँ ही गया हूँ अभी मैं, 3-4 साल ही तो हुए हैं. लोगों को लगता है लेगेसी बनती है 10-12 साल में, लेगेसी बनती है 20-25 साल में. उस टाइम लेगेसी बनती जरूर है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि लेगेसी के साथ साथ आपको वो एक वर्थ जो आप बना रहे हो स्टार्ट करिए. इफ यू हैव डन वन गेम, इफ यू हैव डन वन टूर्नामेंट,
people recognize you, that's why you were called for that tournament, right? People had your name on their head, right? That's why you were called for that tournament. So ये चीज कास्टर्स को समझनी पड़ेगी. बहुत सारे कास्टर्स इसलिए खुद को अंडर वैल्यू करते हैं. सपोजिटली लेट्स टेक एन एग्जांपल कि एक कोई टूर्नामेंट है जो 1 करोड़ रुपए का है और किसी के पास कोई आता है, बोलता है कि मैं आपको कास्टिंग के लिए लेना चाहता हूँ. द कास्टर विल बी लाइक हाँ ठीक है. वही जो ऑर्गेनाइजर वो बोलेंगे हम आपको एक दिन का 2,000 रुपए देंगे सिर्फ कास्टिंग करने का. द कास्टर विल बी लाइक हाँ मैं कर लूंगा. बिकॉज उनको लगता है कास्टर्स को कि अगर मैंने ना बोल के 2,000 का 2,001 रुपया भी कर दिया शायद, तो शायद मुझे ले ही ना, कभी ब्लैक लिस्ट कर दे. दिस इज अ थिंग जो हर कास्टर के माइंड में होती है कि यार अगर मैंने पैसे ज्यादा मांग लिए तो मुझे मना ना कर दे. और मना किया तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं इनके पास. सो इसीलिए I've seen people casting for 500 rupees per day as well. और उनको जाकर के बोला है कि ये कुछ नहीं है, 500 रुपए. तुम कास्टर हो, तुम एक शो का फेस हो. Like it might just sound very harsh, but तुम कोई मजदूर नहीं हो जो कि सिर्फ 500 रुपए के लिए ये कर रहा है वो कर रहा है. You're driving an entire show all together. वहां पर स्टार्ट करने से, लोगों को वेलकम करने से, लोगों को थैंक यू फॉर वॉचिंग बोलने तक, जो आवाज लोगों के कान में जा रही है, दैट इज यू. यू नीड टू मेक योर वर्थ फॉर दैट वॉइस एंड यू नीड टू ड्राइव कॉन्वर्जेशंस. वहां पर गेस्ट आएंगे, लोग आएंगे, उन लोगों के सामने तुम बात करोगे. सपोज अगर कल कोई टीम जीती है, कल आइकोसोल जीतती है, वहां पर मान लो कि मॉर्टल को बुलाया जाता है कि आपने टीम के साथ अच्छा किया, ये किया वो किया वगैरह. ये सब चीजें तुम 500 रुपए में सिर्फ करोगे. थिंक अबाउट इट. उस शो का वैल्यू है और तुम उसमें वैल्यू ऐड कर रहे हो. अगर सिर्फ प्लेयर्स को खिलवाते हुए कर दे और कोई आवाज ना हो तो भी ऑडियंस नहीं देखेगी. अगर सिर्फ आवाज रहे और कोई देख नहीं पा रहा है तो वो तो एक रेडियो बन गया जिसको आपको फील करना पड़ेगा, तब जाकर के पता चलेगा. सो ये दोनों चीजें हैंड इन हैंड चलती हैं. दिस इज व्हाट. अगर एक 30 मिनट का बीजीएमआई का गेम है, स्टार्ट हुआ, मैंने फ्लाइट पाथ देखा, मैं एक ऑडियंस हूं, मैंने फ्लाइट पाथ देखा क्योंकि वहां पर बता रहे थे, मैं बैठ के अपना काम करने लग गया, दूसरा टैब खोल करके काम करने लग गया. बट जैसे ही मेरे कान में एक हाइप की आवाज घुसेगी तभी मैं जाकर के वापस देखना चाहूंगा, बिकॉज उस कास्टर की आवाज आई है कि कुछ होने वाला है, कुछ अलग सा एक्शन बिल्डअप होने वाला है. सो यू आर द वॉइस ऑफ द गेम that is driving that exact game. It's BGMI, Valorant, Tekken, anything. You need to understand your worth. अगर 1 करोड़ का टूर्नामेंट और उसमें तुम 2,000-2,500 इसमें कर रहे हो, it's not exactly the mark that it should be, right? You need to understand your value. At least उससे तो कहीं ज्यादा कमाता है एक कास्टर एक दिन का. That is what they need to understand. Yeah, for sure, man. And I think this is. But I'm very glad the kind of opportunities casters are getting today as compared to say 8 years ago, where this is nothing but passion. But hopefully this is a piece of advice that casters can take ahead and kind of help convert that into successful opportunities and eventually careers for the years to come. Okay, let's leave this aside. Let's talk about some of the fun things that you're going to be up to very soon. Firstly, congratulations on the IPL announcement. It is, I think it's a breakthrough achievement when it comes to commentary, especially for us who've been listening to you in esports. We're very glad that you're getting into IPL. That must be very exciting. Give us more details. So yeah, it is like extremely exciting thing for me because when I was doing pro kabaddi, so एक conversation आई थी कि ओशन का एक audition लेते हैं around how well he knows cricket and how can he just be the voice around the sport, right? So वो सब चीजें होती है कि आप कैसा दिखते हो उस समय, कैसा प्रेजेंट करते हो कैमरा के सामने खुद को. लाइक ऑल द स्पाइडर कैम्स जो मूव कर रहे हो उनके अराउंड किस तरीके से बात कर सकते हो, कैसे एंगेज कर सकते हो ऑडियंस को. सो दैट वाज लाइक दोस वर द थिंग्स जिसके अराउंड ये पूरा का पूरा चीज था. And the audition happened a couple of days back. I got to know that I will be part of the broadcasters panel. This audition was about 3 months ago, give or take? No, it was around a month-ish back. Yeah. Okay. So, and a few days back only I got to know about this. And I'm not exactly the only commentator that there is. I'm part of the broadcasters panel. Got it. स्पोर्ट्स में ब्रॉडकास्टर्स बोलते हैं, यहाँ पर कास्टिंग बोलते हैं, वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं. ब्रॉडकास्टर्स, एक ब्रॉडकास्टर होस्ट भी रहता है, एंकर भी रहता है, कमेंटेटर भी रहता है, प्रेजेंटर भी रहता है, पोस्ट गेम एनालिसिस भी करता है, प्री गेम एनालिसिस भी करता है. सो
they have a lot of people around all these things. तो हर किसी को कहीं ना कहीं डाल के जगल किया जाता है to understand कि कौन किस रोल पर है कैसे नहीं. प्लस ऐसा भी नहीं है कि आपको बस अनाउंसमेंट हुआ कल से आप कर रहे हो. So there's like a proper process जिसके अंदर आपको चीजें सिखाई जाती हैं. कबड्डी का प्रेजेंटेशन अलग है, क्रिकेट का प्रेजेंटेशन अलग है, वे ऑफ कॉन्वर्सेशन अलग है, वॉइस मॉड्यूलेशंस अलग है. देयर इज दिस नेटफ्लिक्स सीरीज काला पानी, उसमें देयर इज दिस एक्टर विकास, सो ही इज माय वॉइस ट्रेनर हु इज वर्किंग ऑन द वॉइस एंड ऑल दीस थिंग्स. सो ये सारी चीजें हेल्प करती हैं कि आप कैसे सही तरीके से खुद की वॉइस को प्रेजेंट कर सकते हो. वहां का हाइप अलग होता है, यहाँ का हाइप अलग होता है. सो हर एक चीज, हर एक छोटे से छोटा फैक्टर बहुत सही तरीके से गाइडेंस में काम आता है. सो अगर आज अनाउंसमेंट हुई है और मैं 2 हफ्ते, सपोज मान लो कि 2 हफ्ते बाद कर रहा हूँ कमेंट्री पहली, तो आज से 2 हफ्ते तक बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ वॉइस क्लासेस, ये चीज की क्लास, वो यही चीज चलती रहेगी और दिन के 8-9 घंटे वो क्लासेस होंगी. बट उससे सीखने का तरीका बहुत ज्यादा कुछ सीखने को मिलने वाला है. Yeah, man, that is very exciting. IPL, I think there's no soul that doesn't watch IPL or hasn't watched IPL so far. So we are super excited to see you there. Of course, there is the TV broadcast and there is the OTT broadcast. You're going to be part of Star Sports on the TV broadcast. So that is going to be amazing. Me and my dad are going to sit and watch every single game this time around, and we're going to root for you. And that's going to be an amazing 2 months of journey that you're going to have, and all the very best. Looking forward for more things like this for you in the future. Let's take actually a step back now and talk about, this is not your first stint in sports. You've done pro kabaddi that we talked about. How was that experience, and how did that kind of translate in helping you eventually transition into this IPL game? So kabaddi is also not the first sports gig that I did. Okay. It was Ultimate Kho-Kho for Sony. That was like the first sports gig that I did, and I was a part of the commentators panel there. That was like the first time I did sports. Right. It was happening in Balewadi, Pune. Okay. And when was this? 2 years back. Okay. Yeah. And वो चीज़ किया, so वहीं से मैं स्काउट हुआ कि ये स्पोर्ट्स के अंदर और चीज़ें कर सकता है. So and it all started because of the Star Sports tournament that happened for BGMI. Right. Star Sports happened BGMI. So वहाँ पर स्टार की टीम आई थी. They were like in the conversation कि like his voice and ये चीज़ कर सकते हैं and all. And वहाँ से उस टाइम उनके पास कोई वैकेंसी था नहीं, but सोनी के पास एक वैकेंसी था. So वहाँ से मैं रेफर हुआ. So सोनी के वहाँ का मैंने ऑडिशन दिया. It came out pretty decent. So yeah, it started off like really good out there. वो भी पूरा 1 महीने के आसपास का पूरा सिनेरियो था. That was the first time I saw कि एक एक्चुअल स्पोर्ट्स किस तरीके से काम करता है, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, वहां पर क्या क्या काम रहते हैं. कमिंग डाउन टू कबड्डी स्टार्ट हुआ था 2 दिसंबर को, बट 1 नवंबर से सिर्फ और सिर्फ बैक टू बैक क्लासेस चल रही थी. 1 नवंबर से 1 दिसंबर तक इट वाज जस्ट बैक टू बैक क्लासेस अराउंड कि कबड्डी एज अ स्पोर्ट है क्या, कबड्डी में क्या क्या होता है, उसके रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, किस तरीके से प्लेयर्स काम करते हैं, प्लेयर्स की हिस्ट्रीज क्या है, प्लेयर्स ऑक्शन में कितने में बिके हैं, कौन सा प्लेयर कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे नहीं. NYP विच इज लाइक न्यू युवा पल्टन कबड्डी, उन सब चीज़ों के अराउंड पूरी कॉन्वर्सेशंस रहती थी. कबड्डी के खुद के जो प्लेयर्स हैं वो आते थे हमें चीज़ें सिखाने के लिए, एंड देन दिस अगेन वॉइस क्लासेस और ये सब चीज़ें हो रही हैं. और अगर वहाँ पर स्टार्स एंड ऑल आते थे तो उनके साथ भी बातचीत. That is so much to absorb in like a month's time. And people think, you know, बन गए तो बन गए. It's like, you know, it's a constant learning process, and that is like a fair bit of amount to catch up on in just a month's time. So must have been pretty hectic. But stars like faculty is really good in terms of grooming a person. उनसे अगर आपको कोई डाउट है, आप रात के 1 बजे भी पूछ लोगे, they'll be there to help you around the thing. स्टार की पूरी फैकल्टी is just like on their toes with every single thing. ये चीज़ ऐसे कर सकते हैं, ये चीज़ वैसे कर सकते हैं, ये होता है, ये करो, वो करो. And they are the ones who are encouraging us as well कि आप इस काम में अच्छे करते हो, इसको ऐसे भी करके देखो, ये भी करके देखो, ये भी और अच्छा हो सकता है. So they in that sense are like a proper guidance. Where I think अगर वो चीज़ होती है, अगर इसके बाद मैं वापस ई स्पोर्ट्स में आता हूँ, I'll myself take this initiative कि मैं ये चीज़ ई स्पोर्ट्स में कास्टर्स के लिए कर सकूँ, जो मुझे वहाँ से नॉलेज मिल रही है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं, क्या चीज़ क्या नहीं. Awesome. So moving on, superstars, what do? They do music videos. And I had a little birdie chirp in my ear that something is
cooking. Yeah. क्या हो रहा है ओशन? Give us some more deets. So इस बार का मेरा मुंबई जाना स्टार स्पोर्ट्स में जब प्रो कबड्डी था, आई बिलीव दिस इज समथिंग जहां मैंने मतलब नॉट टू से कि पिछले 4 साल में शायद उतना कुछ नहीं किया, बट इन 4 महीनों में मैंने जो किया मुझे लगता है वो पिछले 4 साल के एक इक्वल वेट पर आकर के आ गया ये 4 महीने. सो इन 4 महीनों में मैंने ऑब्वियसली आईपीएल के लिए जो ग्राइंड था वो किया, इन 4 महीने मैंने प्रो कबड्डी किया, और इन 4 महीने के अंदर मैंने एक म्यूजिक सॉन्ग के ऊपर भी काम किया, which is one of the 10 songs that will be released throughout the year धीरे धीरे करके. And there are songs with the name called Nuclear War, there's a song called Alpha Male, but there is this song that is releasing, its name is Daddy Jokes. I see. It's like जो dad jokes और वो सब चीजें होता है. Me and my best friend Arjun Kanungo is like a very good friend of mine, more than a friend, he's a brother to me. So we were working on something और ये गाना हमने अर्जुन का एक कॉन्सर्ट आ रहा था मुंबई में, एंड आप मान लीजिए कि संडे को वो कॉन्सर्ट है, थर्सडे की शाम को अर्जुन का मेरे को कॉल आता है, ब्रो स्टूडियो आएगा? आई वाज लाइक ठीक है. मैं स्टूडियो गया, ही वाज लाइक कि ना कल सुबह मैं तेरे को एक ट्यून भेज रहा हूँ, इस पे अपना एक वर्स गेमिंग टर्म्स के रिलेटेड ट्राई करते हैं. आई वाज लाइक ठीक है. 24 घंटे में हमने गाना लिखा, बनाया, एडिट हुआ, सब चीज हुआ 24 घंटे के अंदर, एंड संडे को वी आर परफॉर्मिंग द सॉन्ग. वाओ, वी परफॉर्म द सॉन्ग. दैट इज क्वाइट अ फास्ट टर्नअराउंड. सो जब ये पता चला और वहां पर ऑडियंस का क्रेज भी काफी ज्यादा सही तरीके से आया, वी वर लाइक लेट्स रिलीज दिस सॉन्ग, बट दिस वोंट बी जस्ट वन सॉन्ग दैट विल बी रिलीजिंग, it'll be one of the other songs as well that will be releasing. So अभी बाकियों पर काम चल रहा है, सब चीज हो रही है, but Daddy Jokes is coming out on 21st March. It'll be on Apple Music, Spotify, all those things as well, and उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आ रहा है, and the video is gonna have some gaming sponsors all together. And yeah, I believe it's one of your favorite publishers as well. Yes. So that's one of the sponsors as well. So awesome. The song has all the gaming terms with respect to the hustle of life and work and office की life, ये सब वो सब. So yeah, looking forward, man. Fingers crossed. When are we going to get to see this? 21st March. Awesome. If this podcast goes after 21st March, then you have seen it. Amazing. Yeah. I do remember there was the award show as well in Mumbai, where you were one of the presenters and Arjun actually performed that day. Was that where the seed for the music video kind of started? Yeah, so that's where me and Arjun became very good friends. Right. Like very very good friends. इतना हुआ कि like अगर अर्जुन दिल्ली आ रहे हैं तो वो मेरे घर ही आकर के रुकते हैं, मैं अगर मुंबई जा रहा हूँ तो मैं उनके घर जा रहा हूँ. Like हम लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आराम से गेम्स खेल रहे हैं. He is a gamer himself as well. Like अगर आप अर्जुन की लॉबी में हो, he is like that core BGMI person. भाई रश कर भाई क्या पागल है क्या, नूब है क्या, ये he is that sort of a person. So वो गेमिंग वाइब में we just vibe a lot. हम लोग उसके स्टूडियो में इनफैक्ट इन दैट टाइम जो 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, 24 में से 8 घंटे में वो गाना बन चुका था. बाकी 16 घंटे हमने सिर्फ बीजीएमआई के लिए 2-3 आईडी से बदल के ये वो टीडीएम्स खेल रहे, एक दूसरे के सब चीज कर रहे हैं. सो या बट द एंटायर टीम ऑफ अर्जुन, नीमो, निहाल, सर्वेश, like all Karthik, every single person, Paddy, every single person have been like and his wife Carla, like, and my girlfriend Payal, like हर किसी ने सपोर्ट किया इन सब चीजों को. सो इट्स जस्ट कमिंग आउट प्रीटी डिसेंट सो फार. Awesome, man. Awesome. Can't wait to watch all the videos, and of course the first one on 21st March. Moving on, let's talk about some more passions of yours, right? Something that I discovered through some of your the videos that I saw on YouTube, the Riot Podcast. I saw a lot of shoes in the background. What is your shoe collection like, and how did that passion kind of develop? That developed through a tsunami that took over the gaming scene. I believe. I know what you're talking about. Yeah. I still like it's a deal that still is there. I'll tell you one thing. Scout और मेरा एक deal हो रखा है, वो ये है कि जिस दिन Scout की टीम एक tournament जीतेगी, he's giving me Chicago's, which is worth 6 lakhs. Okay. So that deal is still on. I still remember that. That's one thing. And a Maldives trip, obviously, वो हम लोगों का that's one thing. But other than those things, right? So I have more than 150 to 200 के बीच में shoes at my place. So वही चीज़ है, जब start हुआ, it just took me by a storm as well. I was like, यहाँ बहुत अच्छी saving हो रखी है, क्या करें? एक तो content भी अच्छा बनेगा,
वो हो जाएगा। एंड देन मेरे को खुद को स्नीकर्स में घुसने में मजा आ रहा था। इट्स सॉर्ट ऑफ वन थिंग जो एक छोटे बच्चे के लिए होता है कि एक खिलौना है तो और चाहिए और चाहिए और चाहिए। वही चीज था कि एक जूता है और चाहिए। और अभी भी मेरे पास इनफैक्ट ऐसे भी जूते हैं मेरे घर में जो आज तक मैंने पहने नहीं है, डब्बे में बंद पड़े हुए हैं अभी भी, एंड इट्स स्टिल देयर। बट उससे बहुत ही जल्दी मेरा ट्रांजिशन हुआ इनफैक्ट, राइट। बिकॉज स्नीकर्स का क्या होता है, नॉट ऑल द स्नीकर्स कैन होल्ड वैल्यू फॉर देम, बट मैंने जैसे आपको बताया मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था स्कूल टाइम में। तो 12th क्लास में मेरे जितने भी दोस्त लोग थे वो एकदम प्रॉपर उन चीज़ों में थे, क्या बोलते, कोचिंग क्लासेस और ये सब करते थे, और वो महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस में थे। तो उनको प्रैक्टिस शीट्स वगैरह मिलती थी, तो मेरे दोस्त मुझे ला करके दे देते थे प्रैक्टिस शीट्स भरने के लिए कि ये कर दे, सॉल्व ये कर दे। तो एक दिन मेरा एक दोस्त है मेरे साथ में बैठता था, उसने मुझे एक प्रैक्टिस शीट दी, उसमें 7 क्वेश्चन थे, मुझे आज भी याद है। और मैंने पहले 5 क्वेश्चंस किए, आखिरी के 2 रह गए। मतलब पहले 5 क्वेश्चंस किए, लास्ट के 2 भी कर दिए। बट अगले दिन वो बहुत प्यारी सी फास्ट ट्रैक की एक वॉच पहन के आया हुआ था। बहुत प्यारी वॉच थी फास्ट ट्रैक की, सबको दिखा रहा था कि ये वॉच मुझे कोचिंग में मिली है। I was like, I think school time पे सबका, I think that was one of the goals, right? To have one of those fancy fast track watches. They have amazing colors, crazy straps. उसको वो मिली हुई थी, so I was like कि मतलब कोचिंग में कैसे मिली? तो तब वो मेरी तरफ मुड़ा एंड ही सेड, याद है कल जो तूने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें पहले 5 तो नॉर्मल थे, जो लास्ट के 2 थे ना वो जो भी सॉल्व करता उसको वॉच मिलने वाली थी। So I felt robbed कि it was my thing that I was gonna get, but he got it. तब मेरा वॉचेस में इंटरेस्ट आने लगा कि यार दिस इज समथिंग कि एक दिन इससे अच्छी वॉच लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। सो वो सब चीज हुआ एंड देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग वॉचेस, आई स्टार्टेड रीडिंग अराउंड वॉचेस, आई हैव बुक्स इन माय प्लेस लाइक विद वॉचेस, लाइक ये वॉच वो सब। And now I have more than 300 watches in my collection. Ooh, wow! And I've been a fan of watching your videos of your watch features as well. I get to see them time to time. I don't think I'll ever get to probably wear even a couple of them, but it's a Rolex. That is an awesome watch as well. It's a Rolex Penta. Oh wow! Daytona. Beautiful. That is gorgeous, man. So this is the watch that I bought when I got कबड्डी का confirmation. Oh. So थोड़े बहुत contacts निकलवाए आफ्टर मार्केट से। ये वॉच थोड़ी ज्यादा महंगी है as compared to normal, but ठीक है, it was like कबड्डी हुआ है, स्पोर्ट्स में properly entry हुई है, तो that's why I just got. So where's the diamond studded Rolex with the IPL? So actually you guessed something right. It's coming soon. Is it even bigger? Is that the Bugatti one that I've seen? नहीं यार. So Jacob became a good friend. So from Jacob & Co, Jacob became a good friend after I started doing all those watches and all. And I am getting a Jacob & Co soon. Not me buying it. Fair. I'm being gifted a Jacob & Co soon. So I'm just, even sweeter, right? You know, that is amazing, man. So where do you see this passion going? 300 is gonna become more. It's gonna go more than 1,000, 100%. I know this craze is not, because so men don't have much in terms of jewelry. Yeah, fair. Right. Yeah. This is one thing that we can wear. It tells you time as well. Plus in like formals पे भी चल जाएगा, regular पे भी चल जाएगा, casuals पे भी चल जाएगा. So in that sense, it just looks better. Awesome, man. And it is something जो आप generation to generation pass on. Absolutely, yeah. That is something you can pass on to your kid, and the kids probably not gonna initially know how awesome this is, but yeah, in time. It's just I'm speechless. So all right, moving on. Word for upcoming shoutcasters out there. Do you have a message for them? How do they go about building a career and becoming a commentator? I think shoutcaster would be kind of limiting their possibilities, looking at your growth so far to kind of diversify out. So how do you go ahead, start, and what's the kind of direction that they need to take? Don't copy anyone. Like if you are just getting into shoutcasting, कि no doubt बहुत सारे लोग ये कर सकते हैं, मुझसे भी लोग मिलते हैं, एंकी से भी मिलते हैं, स्पीरो से भी मिलते हैं, मेजी से भी मिलते हैं, फिक्सस से भी, हर किसी ने दिया लाइक कि हम आपको देखते जरूर हैं, हम भी बनना चाहते हैं आपके जैसा मत बनो,
ट्रस्ट में किसी के जैसा मत बनो, लाइक बनना है अपना एक यूनिक स्टाइल लेकर के, USP build एग्जैक्टली खुद का एक बिल्ड करो। एंकी का है, मेजी का इज वेरी गुड विद हिंदी, उसका जो हिंदी का क्लियरेंस है वो बहुत अच्छा है। स्पीरो का है, हिज वॉइस मॉड्यूलेशन इज वेरी गुड। एंकी का जो आता है वो ये है कि उसकी वॉइस, उसकी चीजों पर पकड़ बहुत अच्छी है। कुछ होता है, मेरा है कि मैं स्टैट्स पर बात कर सकता हूँ। एवरीवन हैज ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूएसपी जो हर किसी ने बिल्ड कर रखा है, और वो चीज बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से आती है। सो वो आपको समझना पड़ेगा, क्या आपकी हाइप आपका यूएसपी हो सकता है, क्या आपका कलर आपका यूएसपी हो सकता है। एंड यस, लर्न अबाउट द काइंड ऑफ कास्टिंग्स की क्या क्या होती हैं। कलर कास्टिंग है, प्ले बाय प्ले है, किस तरीके से होती है, और सस्पेंस कैसे बिल्ड करना है। समटाइम्स इन कास्टिंग not even saying something can also build a suspense for the audience. This is something that happens in PC genre a lot. Valorant में कि अगर राउंड स्टार्ट हुआ है, 1:40 का राउंड है, स्टार्टिंग में आपने बताया कि चलिए A साइड जा सकते हैं, B साइड जा सकते हैं, एंड देन 2 सेकंड का पॉज आता है। वो 2 सेकंड का पॉज जब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा ऑडियंस को भी कि कास्टर्स चुप है, क्योंकि प्लेयर्स भी सोच रहे हैं, प्लेयर्स भी डिस्कशन कर रहे हैं। राइट, ये चीज हो रही है। दैट इज समथिंग दैट विल बिल्ड द एंटिसिपेशन कि चुप क्यों, अभी बोलेगा क्या, क्या होने क्या वाला है, ऐसा क्या होगा, अप द इंटेंसिटी। एग्जैक्टली। सो कभी कभी चुप रहना भी एक बहुत बढ़िया कास्टिंग का एक फैक्टर बन जाता है, विच जस्ट नो पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। एंड उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है द गेम्स, एनी गेम, इवन क्लैश रॉयल जैसी एक गेम, मिनी मिलिशिया जैसी गेम जो बच्चे खेलते हैं, दैट इज ऑल्सो टू वास्ट अगर आप उसमें घुस करके समझो। स्ट्रैटेजीज, मेटाज, अंडरस्टैंडिंग, अपडेट्स, पुरानी चीजें, पुराने प्लेयर्स, एवरीथिंग, लाइक इट्स वेरी वास्ट। तो जस्ट रीड, अंडरस्टैंड, वॉच वीडियोस, प्ले, जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा you'll just अंडरस्टैंड मोर, एंड इट विल हेल्प यू डेवलप अ डिफरेंट सेंस ऑफ कास्टिंग। बिकॉज अगेन ऑडियंस जो देख रही है वही उनको नहीं बताना है। Right. You need to build up something जो इस रीजन से हो सकता है जो अभी प्लेयर ए ने प्लेयर बी के साथ किया। Yeah. Awesome, man. Any final shout outs? Shout out to Penta Esports for this entire podcast, and obviously you guys are doing an insane job out here. Thank you. And talking about some teasers, जैसे आपने teaser की बात करी। So that's exactly where we were heading. So what is next for Ocean? What is next for Ocean? See, we started with the conversation of theater. So next for Ocean is gonna be movies and OTT. So and things are happening. I'll just say this one thing: things are happening. It's not just obviously कास्टर्स खुद की ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, लोग खुद का बनाते हैं। सस्टेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सस्टेन कर रहे हो इट्स ऑल लाइक गुड। सो धीरे धीरे चीजें करते रहो। नेवर बी अफ्रेड कि नहीं यार मैं आज ये कास्टिंग कर रहा हूँ, कल वो का, सिर्फ कास्टिंग में ही रहना है। नेवर बी अफ्रेड टू जस्ट गेट आउट ऑफ दैट बबल, दैट कंफर्ट जोन। आई रिमेंबर जब मैंने स्टार्ट किया 14 घंटे भी कास्टिंग करी, बट नाउ आई रियलाइज कि वो एक घिसने का फेज होता है, उसके बाद नहीं। उसके बाद यू नीड टू गिव रेस्ट टू योरसेल्फ, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपका वैल्यू कहाँ पर जाकर के रुकता है, एक्सेट्रा, ये सब चीजें। सो दैट इज द परफेक्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो या यू गाइज माइट जस्ट सी मी इन सम OTT और मूवी सून, एंड IPL तो चल ही रहा है। Awesome, Ocean. Thank you so much for joining us today. Was an absolute blast. Was a beautiful insight into the life of the one and only Ocean Sharma, and all the absolute very best I'm just happy for one thing. ये पॉडकास्ट ऐसे स्टार्ट किया कि आपका एक्चुअली नाम ओशन शर्मा नहीं, तो हर दूसरा वहीं से स्टार्ट होता है। Well, it's something a little different, I think. There is no shadow of a doubt there anymore. That phase is passed long back. So thank you so much for joining. All the very best for the music video for IPL. We will be cheering you on through every single game on Star Sports, and hope that is just the start of an amazing journey that you're going to have in all these industries and the million other things that I'm sure you're going to be doing in the days to come. Can't wait to see it. Can't wait to live that journey. Thank you again, Ocean, and we will see you on the other side. Thank you for having me. Thank you.